एकता बेटा, टर्न ऑन योर वेबकैम। थैंक यू बेटा। राजवीर, सिमरन, टर्न ऑन योर वेबकैम बेटा। सिमरन, we will wait 2 more minutes, then we'll start the class. Okay, today I will teach you a small topic as well as we will revise the NPO. Okay, that will be good now.
Guys, our new topic is interest of the partners drawing. Interest on the drawing. How to calculate the interest of the partners of the drawing beta. This is a small topic and it will use so many times. So just be careful about that. Muskan, can you turn on your webcam beta? Okay, thank you. God bless you. So drawing means the amount withdrawn in cash or any kind by the partner. अगर पार्टनर कैश विड्रॉ करता है या फिर कोई एसेट्स विड्रॉ करता है, so that is called drawing for its personal use. अगर वो बिजनेस में से कैश या अदर देन द कैश और इन एनी काइंड वो कोई भी चीज विड्रॉ करता है, so that is called drawing. But reason is that it should be the personal use. Drawing may be out of the capital or against the profit. ड्रॉइंग्स दो तरह से हो सकती है. ड्रॉ पैसे हम जो निकाल सकते हैं दो तरीके से विड्रॉ कर सकते हैं, या तो हम कैपिटल में से ले सकते हैं या प्रॉफिट में से ले सकते हैं. ठीक है, आई होप ड्रॉइंग इज क्लियर टू यू बेटा. थैंक यू एकता. Okay, whenever we withdraw the money from the business for our personal use, that is called drawing. Okay, so drawing statement can be two types. We can draw out of the capital or we can withdraw from the capital and the profit. The drawing against the capital means withdrawn of the capital. Drawing against the capital means withdrawn of the capital. आपने capital निकाल ली है बेटा, ठीक है. What you have taken out the capital, and withdrawing against the capital is debited to the partners account. और हम उसको पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट में डेबिट कर देते हैं. ओके, हम क्या करते हैं, पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट में डेबिट करते हैं. इट मींस दैट कैपिटल इज रिड्यूस्ड बाय द अमाउंट ऑफ विड्रॉन. इट मींस दैट कि हमने जितनी कैपिटल निकाली है बेटा वो रिड्यूस हो गई उस अमाउंट से. ओके, सो दिस पॉइंट हैज बीन क्लियर टू यू. First point, drawing is clear. Second point, drawing from the capital means withdrawn of the capital. Okay, and whenever we withdraw the capital, we will write into the debit side of the partner's capital account. We will write into the debit side of the partner's capital account. As a result, drawing against the capital, interest on the capital is not allowed to the partner on the withdrawn of the amount. और पार्टनर ने जितना अमाउंट विड्रॉ कर लिया है बेटा एज अ ड्राइंग, उस पे हम इंटरेस्ट ऑन कैपिटल चार्ज नहीं करते हैं. आपको मैंने चार बातें बताई, याद रखिएगा. इसमें से एक एमसीक्यू आ सकता है बेटा. दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट फॉर द एमसीक्यू. गो फॉर द नेक्स्ट वन. ड्रॉइंग अगेंस्ट द प्रॉफिट. ड्रॉइंग अगेंस्ट द प्रॉफिट मीन्स ड्रॉइंग बाय द पार्टनर्स. ड्रॉइंग बाय द पार्टनर्स. ड्रॉइंग बाय द पार्टनर्स अगेंस्ट means drawing by the partner against his or her expected share of profit. Expected share of profit में से उसने अपना जो शेयर है उसने अमाउंट अपना जो है विड्रॉ कर लिया for the year. Drawing against the profit is debited to the drawing account. Drawing against the profit will be debited to the drawings account, not to the capital of the partners account. वो ड्रॉइंग अकाउंट में डेबिट होगा, पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट में बेटा डेबिट नहीं होगा. The actual share of the profit is known at the end of the year and is the date when it's become due to the partner. The withdrawn earlier than it is due, the firm charges the interest for the period of amount is withdrawn by the partners. और उसने जो प्रॉफिट निकाल लिया है, जो उसने ड्राइंग कर ली है प्रॉफिट से, अब उस पे इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग चार्ज किया जाएगा. उस पे इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग चार्ज किया जाएगा. उसने जितने दिन उसको इस्तेमाल किया है, जितने दिन पहले उसने वो पैसा निकाल लिया है, उतने दिन का उसको इंटरेस्ट पे करना पड़ेगा. My point is clear to you beta. Interest on drawing against the capital against the profit, sorry, drawing against the profit and drawing against the capital is clear. Okay, go for
इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग कैलकुलेट करने के बेटा दो मेथड है हमारे पास. वी हैव द टू मेथड्स. जस्ट गो थ्रू इट. Beta, first one, what is the first one? Irregular drawings. First one is irregular drawings. Irregular drawings means same amount or the different amount at the irregular intervals. It means the partner can withdraw same amount or different amount in the different interval of the time. ठीक है? For example, A, B, C are the three partners. So A ने है कभी 10,000 निकाल लिए, कभी 15,000 निकाल लिए, किसी महीने 5,000 निकाल लिए, किसी महीने उसने 6,000 रुपए निकाल लिए और डिफरेंट डेट्स को. ओके, सो दैट इज कॉल्ड irregular drawings. That is called irregular drawings. And regular drawings means the drawings of some amount on the different amount at, it means the drawing of the same amount at the regular interval. Same amount at regular interval. For example, regular drawings में क्या आपने बिगनिंग ऑफ द मंथ में हर 10,000 निकाल लिए, तो हर महीने जनवरी में भी, फरवरी में भी, मार्च में भी, अप्रैल में भी, मई में भी, जून में भी अपने बिगनिंग ऑफ द मंथ में आपने क्या किया बेटा, अमाउंट विड्रॉ कर लिया. या आपने मिडिल ऑफ द मंथ में सेम अमाउंट 10,000 विड्रॉ कर लिया पूरे साल, या एंड ऑफ द मंथ में आपने 5,000 रुपीज पूरे साल विड्रॉ कर लिए. दैट विल बी द रेगुलर ड्रॉइंग्स. ठीक है बेटा, क्लियर. इररेगुलर ड्रॉइंग्स में क्या होगा, आपका अमाउंट और डेट फिक्स नहीं होगी. आप जब चाहें आप विड्रॉ कर सकते हैं बेटा, जितना अमाउंट चाहे विड्रॉ कर लीजिए. दैट इज कॉल्ड इररेगुलर ड्रॉइंग्स. रेगुलर ड्रॉइंग्स में क्या होगा, अपने फर्स्ट डे ऑफ एवरी मंथ आपने 10,000 रुपए निकालना शुरू कर दिए. दैट विल बी द रेगुलर ड्रॉइंग्स. क्लियर. अब हाउ टू कैलकुलेट दीज थिंग्स बेटा. The interest on drawing, when the drawings are made at irregular period or the different amount, the product method of the calculating the interest is followed. जब आपका irregular drawings होती है तो हम लोग प्रोडक्ट मेथड को यूज करते हैं. कौन से मेथड को यूज करते हैं? We are using the product method. And second one is average method. And second one is the average method. When the drawings are made of the same amount at regular interval, interest on drawing is calculated using the period method, average period method. जब हमारी रेगुलर इंटरवल्स की ड्राइंग्स होती हैं तो हम एवरेज पीरियड मेथड यूज करते हैं. The product method, what we will do with the product method, how we will calculate it. When the unequal amount is withdrawn at the different date, unequal amount in the different date, so what you will do,
when there is the irregular drawing, so interest on drawing is calculated with the help of simple method or product method. इसके दो मेथड, सिंपल मेथड और प्रोडक्ट मेथड. ओके, सो लेट्स सी सिंपल मेथड एंड द प्रोडक्ट मेथड. इसको डिस्कस कर लेते हैं बेटा. ज्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है इसका, सिर्फ इसका अमाउंट यूज होता है बेटा, चेक कर लीजिए. बेटा दिस इज द क्वेश्चन. इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग हमें चार्ज करनी है 15% एट डिफरेंट डेट्स पे, 1 मई, 1 अगस्त, 30 सितंबर, 31 जनवरी, 31 मार्च. उसने डिफरेंट अमाउंट डिफरेंट इंटरवल पे विड्रॉ किए. तो सबसे पहले हम इसको कैलकुलेट करते हैं सिंपल मेथड से. The simple method, what you will do, just make a table like that. First for date, second for amount, third for number of the months, fourth interest on drawing. First May 2020, the drawing was 2000. 1st August, drawing 2020 500. 30th September 2020, that will be 2000. 31st Jan 2021, 6000. 31st March 2021, drawing is 2000. बेटा हमने विड्रॉ किया है 1 मई को. तो मई, जून, जुलाई, अगस्त, सितंबर, अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर, जनवरी, फरवरी, मार्च, हमें 11 महीने का बेटा क्या देना पड़ेगा, इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग.
हमने 11 मंथ्स इसको यूज किया है ड्राइंग का, ये पैसा हमने 11 मंथ यूज किया है। सेम एज इफ यू टॉक अबाउट द अगस्त, अगस्त सितंबर अक्टूबर नवंबर दिसंबर जनवरी फरवरी मार्च, 8 मंथ्स हमने यूज किया है इसको। ऐसे ही अगर हम सितंबर की बात करें तो हमने 6 महीने यूज किया है, और जनवरी में 2 मंथ्स एंड 31 मार्च को हमने, बाद नया ईयर आ जाएगा तो हमने उसको नेक्स्ट ईयर यूज करना है मनी को। अब इसको बेटा कैलकुलेट करने के लिए फर्स्ट वाला जो है हमारा कितना है 20,000, सॉरी 2,000 मल्टीप्लाइड बाय कितना हमारा इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग है 15/100 into 11/12 months, that will be 275. Same as for this one, 5,000 multiplied by 15/100 into 8/12, that is 500. Okay beta ji, that is clear to you guys? Just check it out, that is clear to you? Go for the next one, product method. Beta, we are preparing for, you are my toppers, that's why I am explaining you this one, but this is not important, so much important beta. But this is in your syllabus, that's why I am teaching you, and you are my topper students, that's why I am teaching you, because you cannot lose a single marks, that's why I am teaching you this one. Product method. For the same question, first write on the date, amount, number of months, and D multiplied by D is equal to B multiplied by C, and this is A, B, C. Date is 1st May 2020, 2000. 1st August 2020, 5,000, sorry 500.
But what will I? This is given. The dates are given in the question. Amount is given to the question. How much we have used this amount? 11 months, 8 months, 6 months, 2 months, and 0. In a simple method, what we will do? Just multiply by this. This multiplied by this. Yani 2000 multiplied by 11, and that is 5000 multiplied by 8. Like that, and you will find this amount. You will find this amount 86,000. Just go through it. 86,000. Okay. After that, what you will do? You will put into the formula. फॉर्मूले में इसको लगाते हैं. इंटरेस्ट टोटल आया हमारा 86,000. सो इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग is equal to 86,000 multiplied by 15 upon 100 into 1 by 12. That will be 1075. That's your answer. Okay, that's your answer. Go for next one. This is not so important, so bas do only 1 or 2 questions. Okay beta, don't do more than that. Is it clear beta? This is the important one. Second, average period method. In average period method beta, used where the regular drawings is the uniform amount. Okay, फिक्स डेट पे फिक्स्ड अमाउंट वो विड्रॉ कर रहा है तो हम एवरेज मेथड यूज करेंगे. एवरेज पीरियड मेथड यूज करेंगे. नंबर 1, केस नंबर 1. This is important and you should write these cases. But 9 cases are there, you should write it. If a partner withdrawn fixed amount in the beginning of every month, interest is charged on the whole amount for 6/2 months. Listen it carefully, beta ji. If a partner withdrawn fixed amount in the beginning, this is important, in the beginning of every month, the interest is charged on the whole amount is 6.5, 6.5 or half. This is very important beta. Okay, is it clear to you?
If in the question it will says that the partner withdraw the 10,000 rupees in the beginning of the every month, so how you will calculate the interest on capital, interest on the drawings? You should multiply by this. So take the example of that. इसका एक एग्जाम्पल और इसको एक और देख लेते हैं. Case second, if a partner withdrawn fixed amount in the middle of every month, so interest is charged on the whole amount for 6 months. For 6 months. Case third, if a partner withdrawn fixed amount in the end of every month, interest is charged on the whole amount for 5.5 months. So just go through this, just try to understand. In the beginning of the month, how many months we will multiply? 6.5 months. We will multiply by 6.5 months. अगर हमारा beginning of the middle of the month होगा, so हम 6 से multiply करेंगे, 6 by 12. अगर हमारा if we have end of the month में withdraw किया है, so we will multiply 5.5. Okay, take the example for interest on drawing. He withdraw 10,000. 15% is the rate of interest. So he withdraw beginning of the month. So what you will do? 6.5 by 12. If middle of the month, what you will do? Same amount. 10,000 multiplied by 15 upon 100 into 6 by 12. Same as in the end of the month, multiplied by 5.5. Okay, is this clear to you, beta? You have to remember these two things. In the beginning of the month, we will multiply by 6.5 by 12. In the end of the month, middle of the month, 6, and end of the month, 5.5. Remember these 2 points. I am sending you the picture also. Same as take another case. If in the place of month, we'll take the quarter. What we will do? If a partner withdraw fixed amount in the beginning of every quarter,
beginning of each quarter, so that will be 7.5. Okay, guys. Whenever the quarter is there, what you will do? Just go through this quarter. That will be the 4.5. Okay. So 7/7.5, 6, and 4/2. I'll send you the table of that. Don't worry about that. Just try to understand it. In the evening, I will send you the table of this. Okay. Don't worry about that. That will be 4th, 5th, and this will be your 6th. 6th case. Okay. Three more cases are there. Just finish it, then we'll do some practical questions for that. Case 7. A fixed amount is withdrawn during 6 months. Beginning, so 3.5, middle, 3 months, and 2.5 months. Is it clear, beta? For example, interest on drawing is rate of okay, guys. Can you turn on your webcam, beta? Guys, can you turn on your webcams?
Go for one more case. Case 8. If the date of withdrawn is not given, so interest on drawing for the year is calculated for 6 months on average basis. ओके बेटा, अगर आपको ड्राइंग का डेट नहीं दिया हुआ है, डेट इज नॉट गिवन टू यू, तो आप 6 मंथ सिर्फ 6 से मल्टीप्लाई करेंगे. किससे मल्टीप्लाई करेंगे आप? 6 से. And seventh is if per annum, ninth one is if per annum is not given, so you will do multiplied by, you will charge the full year drawing. Okay, so you can do any question beta. Which one do you want? So do the illustration number 28. Can you do that? Illustration number 28, just try to do that, so the concept will be more clear to you. Do the illustration number 28. That will be on the page number 2.44. Just go through. It's very simple. It's for kids, my dear, not for you. छोटे बच्चों के लिए ये कर सकते हो तुम लोग, मुझे पता है. Just go do it. Do it fast, beta, and WhatsApp me. Do the illustration number 8. If you have any doubt, you can WhatsApp me. It's very easy for you guys.
Guys, done? Okay, beta, finish it and send to me. Okay, I'll wait for your answer. Please do send me. I'll wait for your answer. Please do send me.